Hello children, Namaskar. I hope you all are fine and good at your home. Yesterday in our live class, we have completed chapter number 7. Yes, I hope you all have written that. So dear kids, in this week, we will start with term 2 revision sheet. Okay? We will do the chapters of term 2. Right? We will revise term 2 syllabus. Okay? So today in this video, we will revise chapter number 8. Before we start our class, everyone join your hands. Close your eyes. भूर्भुवस्वः भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् So now let's start with chapter number 8. Birds, beaks, claws and nest. So dear kids, let's recall what we have learned in this chapter. हमने ये चैप्टर में क्या लर्न किया था? Yes, we learn about birds. Right? हमने ये चैप्टर में birds के बारे में लर्न किया था that the bird is an animal that has the following features, like they have feathers, wings, they have beak, right? They have claws, feet, and also they have wings, right? And they have different feathers. Yes, feathers में भी उनके पास different 3 types के feathers होते हैं. Down feathers, body feather and flight feather. Yes, and these feathers they perform the features, right? That down feather birds को help करते हैं उसकी body warm रखने के लिए. Body feather they give shapes to the bird's body, right? Flight feathers help them to fly and to change the direction, right? So ये different feathers भी they perform different functions. Yes, then we learn about how birds can fly, right? What helps them to fly? So birds कैसे fly होते हैं? क्यों high fly होते हैं? Because they have a streamlined body, right? Birds की body कैसी है? Streamlined. And they have a narrow at the end and middle में एकदम broad जैसा होता है, like a boat, right? This streamlined body help them to fly in the air. Then the next is they have hollow bones. Yes, empty bones होते हैं उनके. The bird's body is also very light. Yes, and the third thing, उसके wings उसको help करते हैं to fly. So dear kids, some birds are also cannot fly. ऐसे भी birds है जो fly नहीं कर सकते हैं and जिसको हम क्या कहते हैं? Flightless bird. Yes, flightless birds are the birds
those cannot fly. The next we learn about beaks. ये तो हमने birds के बारे में learn किया. Then उसके different body parts के बारे में भी learn किया. Like beak, claws, उसके feet, उसके nest, right? So birds have beak. They do not have mouth. They do not have teeth. Instead, they have a beak. And that beak they use for catching, holding their food, eating their food, feeding their young ones. Yes, to carry the material for building their nest and also for protecting themselves. Yes, और जो बर्ड्स के शेप, बिग के जो शेप्स होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं एंड दैट डिपेंड्स अपॉन देयर ईटिंग हैबिट्स, राइट. बर्ड्स की जो बिग्स हैं दे आर ऑल्सो डिफरेंट in different birds. Why? Because they are dependent upon the eating habits, what type of food they eat, right? So some birds eat cracks, nuts, seeds, right? So that's why they have a strong, short and hard beak. Yes, and उसके example है pigeon. So some birds like eagle and vulture, yes, वो क्या करते हैं, दे ईट द फ्लैश ऑफ द अदर एनिमल. सो दैट्स वाई अब इसके बीक कैसे होंगे, एकदम शार्प एंड हुक, राइट. नाउ सम बर्ड्स लाइक वुडपैकर, yes, they have a pointed beaks because see they have to make holes in the tree trunk, right? That's why इनके जो beaks होते हैं वो कैसे होते हैं, एकदम pointed. Next, birds like duck, geese, they have a broad and flat beak. Now some birds like hummingbirds, sunbird, they have a long and pointed beak because they have to suck liquid from the flower, right? So these things we learn about beak. Next we learn about their claws and feet, right? So all birds have 2 feet, right? Birds के पास कितने feet होते हैं, 2, and on each foot there are total 4 toes. Yes, कितने toes होते हैं, total 4. And that claws and feet, they are also depend upon their eating habits only, right? कि वो कैसा टाइप का फूड खाते हैं, कहाँ पे रहते हैं, right? Upon their natural habitat, yes, उसका environment. So some birds are called perching birds. So why they are called perching birds? Because they have to hold the branches of trees. So आपने देखा होगा स्पैरो, देन क्रो, यस. अब इन दे हैव टू होल्ड द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज. ये हमें वायर पे, फिर खंबे पे ऐसे दिखते ही हैं, राइट. सो इनके जो टोज होते हैं वो कैसे होते हैं, 3 टोज जो हैं. बर्ड्स के पास टोटल 4 टोज होते हैं. इनमें से 3 टोज इन द फ्रंट साइड एंड 1 टो एट द बैक, right? So this type of birds which hold the branches of trees, they are called perching birds. The next is flesh eating birds. So the birds who eat flesh of other animals, अब उनको animals को pick up करने के लिए they should have the very sharp hook claws so that they can hold the animal, right? So that's why bird like eagle, yes, vulture, they have a claws which is called talons, right? इनके जो legs होते हैं वो बहुत ही strong होते हैं and they have a hook claws which is called talons which help them to pick up small animals. The next is about climbing birds. So
क्लाइंबिंग बर्ड्स कौन से होते हैं? द बर्ड्स हु क्लाइंब, yes, so climb the tree. So birds such as parrot, woodpecker, so they have climbing claws. Next is about scratching birds. So ऐसे birds जो अपना खाना ग्राउंड में ढूंढते हैं, right? Birds like hen, peacock, they feed on insects and seed which is buried into the ground, right? So to dig that ground, they scratch their legs to find out the insects and seeds which is buried in the ground. So that's why उनके जो feet होते हैं वो कैसे होते हैं? एकदम scratch. Right, that's why this type of birds like hen and peacock, they are called scratching birds. Next is about water birds. So ऐसे birds जो water में रहते हैं, right, जिनको swim भी करना पड़ता है कभी कभी, तो उन सबको हम क्या कहते हैं? water birds. The next is about wading birds. So birds which is their legs are very long, yes, which help them to walk in the water, and their toes are spread, right, and which help them to balance in the soft mud. Okay, this thing we learn about feet and claws of a bird. Next we learn about the nest, right? So birds make their nest. Yes, why they make their nest? To raise their young ones to lay eggs into it, right? And वो nest उसको क्या करता है? उसके egg को संभालता है, right? Enemies से protect करता है, yes. एंड हमने देखा होगा यूजुअली जो भी नेस्ट बनते हैं वो हमारे रूफ टॉप पे बनते हैं, ग्राउंड में होते हैं, ट्रीज में होते हैं, राइट? एंड विच मटीरियल इज नीडेड टू बिल्ड द नेस्ट? मटीरियल लाइक ग्रास, लीव्स, फर, थ्रेड्स. Yes, these are the materials from which they build their nest. And see, some common birds, they make same type of net, which is cup shaped nest, right? हमने देखा होगा pigeon, then sparrow, bulbul, they build cup shaped nest with the help of, वो एकदम ऐसे झाड़ू जैसा नहीं होता है, उससे वो बनाता है, twigs, grass, right? लकड़ी छोटी छोटी होती है ना, उनसे वो कप शेप का नेस्ट बनाते हैं. देन नेक्स्ट इज अबाउट नेस्ट ऑफ अ वीवर बर्ड. सी, ये एकदम स्पेशल नेस्ट होता है विच इज हैंगिंग ऑन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज, राइट? एंड इसकी स्पेशलिटी क्या है? दे आर वेरी लॉन्ग एंड दे हैव अ स्मॉल ओपनिंग एट द बॉटम, राइट? एकदम स्मॉल ओपनिंग होती है एट द बॉटम फॉर द बर्ड्स टू एंटर. लाइक दरवाजा की तरह, डोर की तरह वो लोग एकदम स्मॉल ओपनिंग बनाते हैं, यस, एट द बॉटम ऑफ द नेस्ट, राइट? देन नेक्स्ट इज अबाउट टेलर बर्ड्स. टेलर बर्ड्स क्या करते हैं? दे हैव अ वेरी शार्प बिक, सो दैट्स व्हाई व्हाट दे डू, दे सीव द broad leaves together to make their nest, and inside that sieved leaves they put some soft material, yes, and which help them to rest in the house comfortably. So these things we have learned in our chapter, yes. So अब हमने रिवीजन कर लिया, आपको याद आ गया होगा सब कुछ. एंड
like our mother cares for us? Yes, mother bird also cares their babies. Right, mother birds भी अपने बेबीज का अच्छे से ध्यान रखती हैं जब तक उसको अपना खुद का खाना सर्च करने के लिए ना आ जाए, जब तक उसके फेदर्स ना आ जाए, जब तक वो फ्लाई ना कर सके, तब तक मदर बर्ड्स उसका बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखती हैं. ओके, सो नाउ डियर किड्स, एवरीवन टेक आउट योर रिविजन शीट and come on chapter number 8, page number 2. We will complete this chapter. Okay, question number 1, choose the correct option. You have to choose the correct option. MCQs. Number first, which part of the body helps a bird to catch and eat food? Right, कौन सा part of the body है जो birds को help करता है to catch and to eat the food? So which part, dear kids? Yes, beak. Right, beak क्या करता है? Help the birds to catch, to feed their young ones, to hold something. Right? So tick mark everyone second option. Sorry, option C. Number second, which of this feather help to keep a bird warm? Right, we learn about 3 types of feathers: body feather, down feather and flight feather. So इसमें से कौन सा feather है जो birds को warm रखता है? So see dear kids, body feather क्या करता है? They give shapes to the bird, right? And flight feather helps them to fly. So down feather एक ऐसा feather है जो birds को warm रखता है. Okay? So tick option B. Third one, which of this bird use its beak like a needle to sieve leaves together to build a nest? ऐसा कौन सा bird है जिसकी beaks बहुत ही sharp है, like a needle, and वो क्या करता है, अपना nest कैसे बनाता है? By sieving the leaves together. So what is that bird? Which is that bird? Tailor bird. Right? Tailor bird एक ऐसा bird है जो अपना नेस्ट सीव करता है एंड फिर उसके अंदर सॉफ्ट मटेरियल्स पुट करके दे लिव इन दैट. ओके, सो टिक ऑप्शन बी. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 2, फिलिंग द ब्लैंक्स. नंबर फर्स्ट, बर्ड्स लाइक डैश suck nectar from flowers. So which bird suck nectar from flowers? See the option sunbird and pigeon. So it's very easy. Sunbird एक ऐसा bird है जो suck करता है nectar from the flowers, right? So tick mark sunbird and write there sunbird everyone. Second one, wings are joined to the bird's body with the help of dash. राइट, विंग्स जो होते हैं वो जॉइन होते हैं, राइट, बर्ड्स की बॉडी में विद द हेल्प ऑफ मसल्स. राइट, सो राइट देयर मसल्स एवरीवन, बिकॉज जो विंग्स होते हैं वो बर्ड्स के बॉडी से अटैच होते हैं, जॉइन होते हैं विद द हेल्प ऑफ मसल्स. थर्ड वन, birds usually have dash feet with dash toes on each. So birds के पास कितने feet होती है? 2 feet. And कितने toes होते हैं? 4. So write there 2 and 4. Okay. So now come to question number 3, true or false. First one, all birds have the same kinds of beak. No. क्या सारे birds की same kinds of beak होती हैं? No, beaks are dependent upon the eating habits, right? So that's why this statement is false. Second one, a bird uses its wings for building its nest.
क्या बर्ड्स उसके विंग्स यूज करता है? नो, बर्ड्स क्या यूज करता है? देयर बीक एंड उसके फिट, राइट? सो दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स. Third one, birds have 3 types of feathers. Yes, it is correct. Birds के पास 3 types of feathers होते हैं. Can you give me the names of feathers? Think everyone. Yes, down feather, body feather and flight feather. Now come to question number 4. Write 2 examples for the following. You have to write 2 examples, okay? Number first, birds with talons. ऐसे birds जिसके पास sharp and hook claws होते हैं. Right? So, what are the names of birds like eagle and hawk? So, write everyone. Second one, things that bird use to make nest. ऐसी थिंग्स जिससे बर्ड्स अपना नेस्ट बनाते हैं. यस, कॉटन, स्ट्रॉ, ट्विंग्स, थ्रेड, राइट. थर्ड वन, बर्ड्स विथ स्ट्रॉन्ग, शॉर्ट एंड हार्ड बीक. सो व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग, शॉर्ट एंड हार्ड बीक? पीकॉक एंड pigeon. Number 4, birds with strong pointed beak. Right? इनके pointed beaks होते हैं. So that is woodpecker and hoopie. Next, birds with web feet. Right? Web feet वाले birds कौन से हैं? Water birds, duck and goose. So completed everyone? Now come to page number 3. So come on page number 3, match the following. First one, holes in trees. So ऐसा कौन सा birds है जो holes बनाते हैं trees में? Very good, woodpecker. So write there E. Second, talons. Which birds have talons? Yes, eagle. So write there C. Long and pointed beak. ऐसा कौन सा एनिमल है? सॉरी, बर्ड जिसके पास लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक है? सनबर्ड, ऑप्शन बी. नेक्स्ट इज वेब फीट. वेब फीट सिर्फ वाटर बर्ड्स को ही होती है, सो इट इज वेरी इजी. डक एंड गीज. सो हियर डक इज गिवन, ऑप्शन ए. स्ट्रॉन्ग, शॉर्ट एंड हार्ड बीक. विच बर्ड हैव स्ट्रॉन्ग, शॉर्ट एंड हार्ड बीक? Sparrow, pigeon, right? So option D. Now come to question number 6, logical question answers. See dear kids, I am going to discuss this. You have to write in your homework. Number first, why do pigeon and vulture have different types of beak? क्यों pigeon and vulture के पास सेम बीक नहीं है? Why they have different beak? Because see, pigeon क्या खाता है? Nuts and seed. Whereas vultures, they eat flesh of other animal. And we know that कि जो भी beaks होती है, they depend upon the eating habits. Right? Second one, what will happen if duck and geese did not have holes in their beak? क्या होगा अगर डक एंड गीस के पास होल्स नहीं होंगे तो? सी, दे विल ईट दी, जो भी कचरा, जो भी है, मडी वाटर है, सब कुछ उसके इनसाइड दी बॉडी चला जाएगा, राइट? इफ दे डू नॉट हैव होल्स.
Third one, should we break the eggs or hurt the chicks in bird's neck? क्या हमें बर्ड्स के एग को ब्रेक करना चाहिए या तो उनके चिक्स को हर्ट करना चाहिए? नो, वी शुड नेवर ब्रेक द एग्स और हर्ट द चिक्स in bird's nest. Okay? Now come to question number 7. Let's do it. You have to do the activity which is given here. First one, become a bird watcher. अब आप आज के दिन क्या बन गए हो? Bird watcher बन गए हो. You have to observe, you have to watch the bird. Yes? Take a notebook with you when you go to bird watching. Note down interesting information about that you see, like color, uska shape of the beak, the kind of sound they make, how they move. Right? वो आपको watch करना है. Yes, जब भी आप बाहर जाओ, रूफ टैप पे, कभी कहीं पे भी जाओ आप, you have to take your notebook and you have to observe the little things of the birds. Right? How they move, what kind of sound they make. Yes? आपको आज के दिन बर्ड को वॉच करना है and you have to write down the interesting information about that bird which you see. Okay? I hope you will enjoy doing this. Good. Second one, draw beaks, feet and claws of different birds. You have to draw the beak, feet and claws of different birds in your notebook. Okay, only two draw करना आप, 2 beak and 2 feet. Okay. Third one, what is it? Beginning with Y, cross out every other letter to get the name of a bird. Right? Y से यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है. We have to cross the every other letter. Right? एक छोड़ के एक letter and we have to find out which bird's name is going to come. So the bird is parakeet. Okay? So question number 6 and question number 7 you are going to do at your home. This is your homework. Okay, dear kids, I hope you have understood chapter number 8 clearly. Tomorrow we will do the revision of chapter number 9. Okay, so bye kids, take care, have a good day, namaskar.